Hello students, welcome to Sagar College of Science. So last class रे आम डिस्कशन करूथिले molecular basis of inheritance रो गोटे स्पेशल टॉपिक दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन मेकानिज्म. सो आज गोटे स्पेशल टॉपिक पढ़िबा दैट इज योर ट्रांसक्रिप्शन. सो प्रथम कथा हला द जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल. Okay, so DNA code ଅଛି. For example, this is a cell. Okay, and inside the cell, this is the nucleus part. So inside the nucleus, this is what? The genetic material that is your DNA. Okay. So where this genetic material is present? This is nucleus and this part is the cytoplasm. This part is clear, and inside the nucleus, this is my genetic material that is your DNA. जेनेटिक मटेरियल प्रॉपर्टीज रे हम डिस्कशन करिथिलु कि द जेनेटिक मटेरियल दा को मटेरियल दा जेनेटिक मटेरियल हम इट कंटेन्स ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. आ पखरे सेल रो सबु तक इन्फॉर्मेशन स्टोरेज हेकरी थिवो. का पखरे थाए? डीएनए पखरे थाए. सो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एंड दैट जेनेटिक मटेरियल इज एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ. से तार निजर ओन कॉपी बनै पारुथबा निश्चित भाव रे दरकार. देन इट मस्ट एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स. तो ये जो एक्सप्रेस करिवो इंफॉर्मेशन एक्सप्रेशन दा केमति का हबो? फॉर एग्जांपल दिस इज माय डीएनए. इट हैज द इंफॉर्मेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल पास द इंफॉर्मेशन टू द messenger RNA, mRNA, then the information passes to protein. So once these proteins are formed, then you can say the information is expressed. This is called as gene expression. ये प्रक्रिया को हमें कौन कहबा? जीन एक्सप्रेशन कहबा बा सेंट्रल डगमा भी याको कहा जाए. सेंट्रल डगमा और जीन एक्सप्रेशन. So it involves two steps. The step one, DNA will make the mRNA, and the first step, this is the step A and this is the step B. So step A is called as transcription and the step B is called as translation. Second step is called as translation. Information ta kya pakre hoche? DNA pakre hoche. DNA is present inside the nucleus. It is the master copy. DNA is the master copy. And the DNA present inside the nucleus will guide the synthesis of proteins. Protein synthesis टा कोठी हबो? In the cytoplasm. Cytoplasm रे किए थिबो? A particular factory is there. So here you will get a factory, and this factory that will synthesize protein is called as protein factory, or this is called as your ribosome. Ribosome route na kono? Protein factory. Clear? This is called as protein factory. So this DNA will not go to the ribosome to check the synthesis of proteins. Protein ta kono? It is a polymer of amino acids. Protein, it is a polymer of amino acids. That means amino acids are joined. This is one amino acid joined with next amino acid, joined with third, fourth, 5. First, second, third, 4, 5, 6,
So many amino acids are joined with each other to make a protein chain. Important thing, कहाँ पर कोई amino acid आसी, this is really significant or important process. यदि sequence टा टिके गड़बड़ हो जाए, that protein becomes non-functional protein. जिमिति मने करा गोटे मोबाइल नंबर टे अछि 10 डिजिट रो मोबाइल नंबर से मोबाइल नंबर डायल कला बेले जदि गोटे नंबर टा चेंज हो जाए बा सेम नंबर रो सीक्वेंस भी चेंज हो जाए देन से नंबर टा आउ गोटे को मोबाइल रिंग हबो बुझि पारछ कि नहीं द सीक्वेंस ऑफ द डिजिट इन ए मोबाइल नंबर इज स्पेसिफिक फॉर ईच सिम कार्ड SIM माने कौन सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल फॉर ईच SIM फॉर ईच सब्सक्राइबर देयर इज ए यूनिक सीक्वेंस ऑफ डिजिट इट्स ए डिजिट रो गोटे भी सीक्वेंस सब्स्टिट्यूट हो जाए डिलीट हो जाए मिस हो जाए बस सीक्वेंस चेंज भी हो जाए देन दैट सब्सक्राइबर इज चेंज्ड से नंबर डायल कले आउ गोटे कोड रिंग हबो ठीक सेमती प्रोटीन रो जो अमीनो एसिड रो सीक्वेंस अछि यदि से सीक्वेंस रा गड़बड़ हो जाए दैट प्रोटीन विल बिकम अनदर काइंड ऑफ प्रोटीन दैट प्रोटीन बिकम्स नॉन फंक्शनल प्रोटीन the important thing is to check the sequence of the amino acids so काबरे को अमीनो एसिड आसी कि जोडुची ता पय गोटे इन्फॉर्मेशन दरकार से सीक्वेंस को चेक करबा दरकार प्रकृत रे को अमीनो एसिड असला काबरे कोडा जोडला सेटा गोटे इन्फॉर्मेशन रेबा दरकार आ पर आसीबो आ पर आसीबो आ पर आसीबो एटा गोटे सीक्वेंस रा मेंटेन होबा दरकार बट से इन्फॉर्मेशन का पाकर अछि डीएनए पाकर अछि इट इज द मास्टर कॉपी तो सी डीएनए तो केबे जाई के राइबोसोम रे चेक करबोनी बुझ पाले कि नहीं तो सेथि पई से कोन करबो ता पाकर जो इन्फॉर्मेशन अछि सेरा कॉपी कर दबो इन्फॉर्मेशन इज कॉपीड and the information now passes into the messenger RNA means it is the RNA having message for the synthesis of the proteins that messenger RNA will come through this nuclear pore see the nuclear membrane this part is the nuclear membrane DNA को जो कवर करिके झिल्लीटा अछि निष्टि झिल्ली बा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जेनेटिक मटेरियल गोटे कवर भीतर अछि गोटे चेम्बर भीतर अछि बुझ पाले कि ता भीतर इन्फॉर्मेशन टा कॉपी हे जेबो आ गोटे एमआरएनए को so this mRNA will pass through this pore into the ribosomes तो ये जो पोर देखिए आसिला this pore is called as nuclear pore this pore is called as what nuclear pore pore means holes nuclear membrane रो बहुत holes थाए से होल्स पट देखिए कौन हम मेसेंजर आरएनए बाहरी आसो कौन बाहरी न्यूक्लियस रो बाहरी आसिकी राइ मीन्स साइटोप्लाज्म को आसो साइटोप्लाज्म रो जाइए राइबोसोम पाखे पहुँची जीव आखिर सिक्वेन्स लेखाई गोटे कोडेड इनफॉरमेशन टा पास आसला कॉपी हो गला डीएनए रू टू द एमआरएनए एंड दिस प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन from DNA to the messenger RNA is nothing but called as your transcription. So what is transcription? The process of copying of genetic information from DNA to messenger RNA from DNA to messenger RNA and this copy of the information is called as transcription. This is called as what? Transcription. This part is clear. Now DNA, which is called as the master copy, it will not go to the cytoplasm to check the protein synthesis. DNA is present inside the nucleus, it will not come out from the nucleus. से ता भीतर बाहरी बनी तो
DNA टाको हमें कौन कहवा इट इज द master copy. So it will form what? Messenger RNA. This is your working copy. मास्टर कॉपी रे गोटे वर्किंग कॉपी तैयारी हो जिवो गोटे इनफॉरमेशन ता कॉपी करी पास हो जिवो का पाखु mRNA पाखु तो से सेम messenger RNA from the nucleus it will go to the cytoplasm and it will go to the ribosome to check the synthesis of the proteins, to check the sequence of the amino acids. तादर लिखाई करी अछि का परे को amino acid आसी गोटे कोडेड इनफॉरमेशन हे करी थाए. So accordingly the amino acid will come from the cytoplasm one by one and these are joined with each other by the peptide bond, by the amide bond to make a protein chain. This part is clear. And this process of copying the genetic information from DNA to mRNA is called as transcription. So now tell me, where this transcription will occur? Transcription will occur inside the nucleus. See, site of transcription. Site of transcription को जगह हबो एटा in prokaryotes रे कौन हुए पिले this membrane is absent, this nuclear membrane is absent in prokaryotes. These are simple cells, primitive cells, ancient nucleus. So in the prokaryotes the DNA is naked. DNA is not covered by the nuclear membrane. So it is present in the cytoplasm. The DNA is present in the cytoplasm. So I can say the transcription in prokaryotes occurs in cytoplasm. In prokaryotes, कोठी हबटा cytoplasm रे ही जीवो. But in eukaryotes, it occurs inside nucleus. का भितर ही जीवो न्यूक्लियस भितर आबो प्रोकार्योट रे कोठी हबो साइटोप्लाज्म भितर आबो बुझिउछ. नाउ माय क्वेश्चन इज हम जदी कंपेयर करबा इन बिटवीन द डीएनए रेप्लिकेशन वर्सेस ट्रांसक्रिप्शन तो गोटे जिंस हम एट देखिबा जेते बेले रेप्लिकेशन होउतला पूरा कंप्लीट डीएनए टा रेप्लिकेशन ही जाउतला. देखिबा रेप्लिकेशन वर्सेस ट्रांसक्रिप्शन कौन कांसेप्ट अछि. रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वर्सेस ट्रांसक्रिप्शन. रेप्लिकेशन वर्सेस ट्रांसक्रिप्शन. प्रथम कथा हला रेप्लिकेशन रे डीएनए टा आ गोटे तार कॉपी बनै दिए एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द डीएनए. ओके एंड इन द रेप्लिकेशन प्रोसेस द कंप्लीट डीएनए इज कॉपीड. इन रेप्लिकेशन द होल डीएनए और द कंप्लीट डीएनए इज डुप्लीकेटेड. बुझे हबो the complete DNA is duplicated, the whole DNA is duplicated. But in transcription only one segment of the DNA is transcribed. Here a particular segment, a segment of DNA is transcribed. That means a part of DNA is transcribed, a gene is transcribed. Okay, a DNA containing several number of genes. Only one gene means a segment, a piece of DNA is transcribed here. In replication, what happens? Both strands of the DNA will act as template, act as reference strand, and both strands are replicated. Here, both strands of DNA
as template or a reference. Both strands of DNA act as replicate and both strands are replicated. DNA रे कौन दुईटा जाक strand copy ही जीवो replicate ही जीवो. But in transcription only one strand of DNA acts as template, acts as reference. Only one strand out of two strands of the DNA. DNA are generally two strands present and only one strand will act as template, will act as reference. From that strand the mRNA is transcribed. Okay? From the template strand of DNA mRNA is transcribed. बुझिए and during the replication process the core enzyme is DNA dependent DNA polymerase. तो ये जो एंजाइम लगी वो that enzyme is DNA dependent DNA polymerase. तो ये जो एंजाइम लगी वो to make the mRNA, here it is DNA dependent RNA polymerase. Concept is clear. How कौन है परियो? Here also the principle of complementarity is followed. Replication process में कौन देखो दिले? During the copy of DNA, the which principle will govern the copy? That is what principle of complementarity. Here, complementarity principle governs the replication process. Complementarity means if in one strand of the DNA, in the template strand of DNA, adenine base is present. So when it is replicated, adenine will make a complementary hydrogen bond with thymine and guanine will make the complementary bond with cytosine. But in RNA what will happen? In RNA the thymine is absent. So adenine will make a bond with uracil, guanine will make hydrogen bond with cytosine. Here the complementarity is followed. Which principle? Principle that is complementarity. The principle is the complementarity. बुझिए कि नहीं? So adenine will make a 2 hydrogen bond with uracil and guanine will make 3 hydrogen bond with cytosine. Why? Because the RNA will not contain thymine. This part is clear. This is the difference between replication versus transcription. How can a difference he paribo? The replication process occurs prior to the cell division. When the cell will divide, before the division of cell, the DNA, the genetic material is copied. And in eukaryotes, it occurs in the synthetic phase, S phase of the preparatory phase of cell cycle. But expression, it may occur at any times. Transcription does something when the cell will need a particular protein, it will transcribe the messenger RNA. जेते बेले भी जो परिस्थिति रे भी सेल को प्रोटीन आवश्यकता पड़िबो, it will copy the information into the mRNA. So mRNA is going to the cytoplasm to check the protein synthesis. This part is clear. Now the important thing, the complete DNA is not transcribed. Only the part of the DNA is transcribed. So let me make a diagram here. For example, this is a
chromosome, and the central part of the chromosome is called a centromere. So inside this chromosome, a double-stranded DNA is present. Double-stranded DNA is present, but it containing several number of genes. Suppose this part of the DNA is going to be copied. So this part ta gote copy hebaku jauchi, transcribe hebaku jauchi. So this part is called as transcription unit. This part is called as your transcription unit. The part of the DNA which is transcribed into mRNA. That particular segment, that particular part of the DNA is called as transcription unit, or it is the unit of transcription. That means the part or the segment of DNA which is transcribed into mRNA, into the messenger RNA. That segment is called as what? Transcription unit. But in a transcription unit, only one strand is responsible for making the mRNA. Both strands of the DNA will not act as the template strand. Here, only one strand of DNA will transcribe. Only one strand acts as template. So my question is, why not both strands will transcribe? कौन पाई डीएनए रो दुईटा जाक स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब करि परिबनी बा जदि करिवो प्रॉब्लम टा कोन हबो? दिस इज अ बिग क्वेश्चन. व्हाई both strand of DNA will not transcribe कारण कौन है पारे? Why the both strand of the DNA will not make the proteins? What is the problem? There are two simple reasons. The reason is very easy, very easy. The reason one, first reason one, for example, if both strand will transcribe, so we will get two messenger RNA. So आमे दुईटा messenger RNA पाइबा. Suppose दुईटा जाको messenger RNA translate पे दुईटा protein आमे पाइबा. But remember, दुईटा जाको strand DNA रा complementary to each other. Two strands are not identical. They are complementary. So दुईटा different kind of protein तैयारी हम. Remember, complementary does not mean identical. आडेनाइन तिले थायमिन आसीबो, गुआनाइन तिले साइटोसिन आसीबो, गुआनाइन तिले गुआनाइन आसीबो नहीं कि आडेनाइन जगह आडेनाइन आसीबो नहीं. So two strands are not identical. These are complementary. जदि complementary रहिला दुईटा को strands रो sequence अलगा रहिबो तो ताले कोन हबो? गोटे नॉन फंक्शनल प्रोटीन हि जिवो. दुईटा जाक strand रो दुईटा जाक जो प्रोटीन तयारी हेबो दुईटा जाक इक्वल प्रोटीन हेबेनी. Non-functional protein गोटे strand रो तयारी हेजिवो and it will create a problem in the translation process. Cell भितर unnecessary protein तयारी हो, से protein गोटे toxins पे जे पारे. That protein is essential for cell. और उसका accurate protein हवा दरकार. बुझ पाले कि नहीं? That protein must be accurate and each protein has its own specific function. So protein रे जदि sequence change हे गला amino acid रो सेटा गोटे mal protein हेजिवो, non-functional protein हेजिवो, it will complicate the whole mechanism of translation. The translation process is fruitless. That is why to make a specific protein, the specific amino acid is required. For making the specific amino acid, specific mRNA is required, and for making the specific mRNA, specific strand is required.
That particular strand of the DNA is called as my template strand or the reference strand. बुझे लगे नहीं? So reason one. So here malfunctional protein is synthesized or non-functional protein ତିଆରି ହେଇଯିବ. Non-functional protein synthesis ये तो गला गोटे कथा गोटे कारण. सेकेंड कॉज कौन ही पारे? रीजन टू. रीजन टूटा देख जदि डीएनए रो दुटा जाक स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब करती बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए आर कंप्लीमेंटरी टू इच अदर. तांको पाखरु जितेबेले मेसेंजर आरएनए तैयारी हेबो सो दुईटा जाक मेसेंजर आरएनए कंप्लीमेंटरी हेबो कि नहीं? बोथ आरएनए बोथ सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए विल बी कंप्लीमेंटरी टू इच अदर. यदि कंप्लीमेंटरी एमआरएनए तैयारी हो जाए देन these complementary RNA strand will join with each other by hydrogen bond and it will form a double stranded RNA. This double stranded RNA is not translated. It cannot be translated into the proteins. That is why only one strand of the DNA is transcribed into mRNA and that mRNA will make the proteins. बुझे वो? Second reason कौन है वो? The complementary RNA will form double stranded RNA dsRNA. दी जन जुड़ी जीवे जुड़ी करी डबल स्टैंडर्ड आरएनए गले खेल खत्म. आउ प्रोटीन तैयारी हो परिबन. ट्रांसलेशन विल फेल. The genetic information cannot be expressed. That is why only one strand is transcribed. This is clear? Next concept. What are the components of a transcription unit? The next concept is the components of transcription unit. What are the components? Transcription unit ta gota kono? It is the segment of DNA. It is a segment of DNA or piece of DNA or it is a part of DNA. Segment of DNA. That segment will make the messenger RNA. यदि गोटे स्पेसिफिक एमआरएनए टा तैयारी होबा को जाउची से ट्रांसक्रिप्शन यूनिट रो दीटा एंड रे किछि लैंडमार्क रहइबो कि नहीं? निश्चित भाव रहइबो. से सेगमेंट में कोड आइडेंटिफाई करिबो. तो स्टार्ट पॉइंट कोटा हबो एंड पॉइंट कोटा हबो. द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मस्ट नीड टू लैंडमार्क. द स्टार्ट पॉइंट एंड वन वुड बी योर एंड पॉइंट. सही टू ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हेगिरी सही जगह सरी जेबो. यदि किसी एंड न रहिबो then the transcription will continue. mRNA is synthesized and non-functional protein is synthesized. That is why the transcription unit must have one start point और गोटे end point भी रहिबा निहाती भाବରେ दरकार. तो देखिबा आबे transcription unit which is a double stranded DNA and it must have a start point and it must have the end point also. So केमिति कौन रहिबो तार स्ट्रक्चर करी देखिबा. देखिबा स्ट्रक्चर टा केमिति होउची. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट रो स्ट्रक्चर डा में नबा. फॉर एग्जांपल ए पार्ट टा को हमें जूम कर देले. This is a DNA double helix. You know it is 3 dash, 5 dash, this is 5 dash, this is 3 dash. Okay? 3, 5, 5, 3. तो ये पार्ट टा ट्रांसक्रिप्शन हबा को जाउछ. ये जो पार्ट डीएनए रो ये पार्ट टा ट्रांसक्रिप्शन हबो. It all a transcription unit. In the transcription unit, you will have double stranded DNA. This is a double stranded DNA,
and these two strands are joined by which bond? Intermolecular hydrogen bond in between the bases. Now, two strands are antiparallel. It is my 3' end, this is my 5' end. Clear? This is my 3', this is my 5', and this is 5 dash, this is 3 dash. Okay. Now, from this strand, the mRNA is transcribed. And this strand is what? Template strand. This strand is the template strand, and the opposite strand is your non-template or coding strand. This is called as the coding strand, and this is template strand. So template strand ର କ'ଣ polarity ରହିଲା? 3' to 5'. Template strand, it is what? 3 dash to 5 dash direction polarity. From this strand, that mRNA is synthesized. mRNA, which is single stranded, polarity is what? 5 dash to 3 dash. This is the mRNA polarity. This is the messenger RNA. This is clear? So from the template, the mRNA is transcribed. Now, the start point and end point we will see. The start point here, you will get a start point here. This is start point where the transcription begins. This start point is called as what? Promoter region. This start point is called as what? Promoter region. The end point where the transcription is going to be completed. This is the end mark, this is the end point, and this end point is called as what? Terminator. End point is called as terminator. This is the template, and this part is the promoter part, this part is the terminator part. So promoter part ta कोड रहउछि? टेम्पलेट रो 3' end रे रहउछि बा कोडिंग रो 5' end रे रहउछि. बुझि पारछ कि नहीं? सो ये जो promoter part ta, where it is present? The promoter is present at 5' end of coding strand. Clear? From where the transcription begins? From this point, the transcription will start. Transcription will begin. Terminator ta कोट रहिबो? It is present near the 3 dash end of coding strand. Near the 3 dash end of the coding strand or the 5' end of the template strand. माने रखो. Promoter को जदि आमे नबा template को reference, template रो 3 dash end रे रहिबो promoter, template रो 5' end रे रहिबो कोन? Terminator. बा कोडिंग टा को नेले कोडिंग रो 3 dash रे रहिबो terminator, 5 dash रे रहिबो promoter. 3 dash end of the coding strand, here the transcription ends. Transcription died and is complete is with transcription. Fundamental is clear. Now in between the promoter and the terminator.
मझिरे जो रहा ये जो पार्ट फ्रॉम प्रमोटर टू टर्मिनेटर, these are the structural genes. This part is the structural gene and this structural gene is transcribed. बुझेला? So in between the promoter and terminator there is what? Presence of structural genes, and these genes are transcribed into the mRNA. mRNA polarity is 5' to 3' direction. The enzyme responsible is the RNA polymerase, that will depend on the sequence of template DNA. So, as the RNA will depend on the DNA for the synthesis of RNA. If the enzyme RNA polymerase depends on the sequence of DNA, hence it is called as DNA dependent RNA polymerase. The enzyme is called as what? DNA dependent RNA polymerase. तो से कौन करिवो गोटे मेसेंजर आरएनए बनै देबो. मेसेंजर आरएनए रे कौन पोलैरिटी रहइबो? 5' to 3' direction, and it is transcribed from which strand? Template or coding? Template. The principle governs here, it is principle of complementarity. So suppose I will give you some sequence, किसी sequence मुझे भी template रा सेठु हमें देखिबा केमती गुटे mRNA रो sequence बाहर करि परिबा. For example, the sequence of nitrogen base in a DNA. Sequence of nitrogen base in DNA. GTCAACTAGC. This is 5'. Remember, DNA sequence gote strand ro deich. DNA is double stranded, but I am giving the sequence of only one strand of the DNA. एबे DNA strand रो तुमको जानिए पड़िबो strand ता template strand or the strand is coding strand. किमती का जानिबा how to know a DNA strand is what? My template strand or my coding strand? Transcription ता template रो है. टेम्पलेट को केमती जानिबा? टेम्पलेट रो गोटे पहचान अछि. केमती का तार पहचान केमती जानि परिबो? तार पोलैरिटी हला 3' to 5' डायरेक्शन. किछि देइ नथिबो से खाली 3' 5' जदि देखि देला, that means it is the template. This is the template DNA. आखि बुझी कि जानि दबो डाला template DNA. केमती जाना पड़ला? From the polarity. The transcription occurs in which direction? 5' to 3' direction. The transcription will occur. Transcription occurs in 5' to 3' direction. अच्छा. So transcription follows. For the transcription, the enzyme responsible is RNA polymerase. That RNA polymerase is dependent on the DNA. So it is DNA dependent RNA polymerase. तो mRNA जो तैयारी है वो इटा गला DNA टा कौन तैयारी है वो इटू messenger RNA तैयारी है वो. messenger RNA रो polarity कौन 5' रो स्टार्ट हो. ये 3' अच्छी माने अपोजिट कौन 5'. कॉम्प्लीमेंटरी देखो G अच्छी माने G will make hydrogen bond with cytosine, thiamine will make with A. T टा बे A सहित बॉन्ड करी, नो प्रॉब्लम. adenine C D adenine डाटी कौन करेगा कहते thiamine आसीबा कहते बट RNA रो thiamine नहीं इट किया आसीबो यूरासिल. पुणे adenine थायमिन आसीबा कतटी के आसीबो यूरासिल आसीबो. साइटोसिन अछि माने गुआनाइन, थायमिन अछि माने एडेनाइन. एडेनाइन रहले थायमिन आसीबो किछि प्रॉब्लम नहीं. आई एम सॉरी, एडेनाइन मीन्स हियर यू विल गेट द यूरासिल बेस. गुआनाइन थिले
cytosine thile guanine. This is your polarity, and now this mRNA is formed. Concept कौन बुझ पाला तो टेम्पलेट रे जदि आडेनाइन अछि mRNA रे आसीबो यूरासिल टेम्पलेट रो थायमिन रहिले किछि प्रॉब्लम नहीं आडेनाइन आसीबो बुझ पाला कि नहीं. फॉर एग्जांपल दिस इज टेम्पलेट डिफरेंस टा खाली नोट करो. दिस इज आरएनए बुझिया कि नहीं. adenine make 2 हाइड्रोजन बॉन्ड with uracil. थायमिन जदि थिबो ताले adenine आसीबो किछि असुविधा नहीं. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी. बुझिया कि नहीं. बेले बेले कौन होता है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड न देकर तुमको दे दिबो कोन कोडिंग स्ट्रैंड रा सीक्वेंस ता देर तुम बाहर करिवो व्हाट वुड बी द सीक्वेंस ऑफ mRNA. नाउ सी नेक्स्ट केस हमें नवा सीक्वेंस ऑफ DNA is given to you. I'll give you a DNA sequence, nitrogen base sequence in DNA, double stranded DNA. गोटे स्ट्रांड नहीं जीवा 5 प्राइम स्ट्रांड A T T C G A T A and G. This is 3S. So आर पहचान देखो 5' 3' पोलारिटी अच्छे माने एटा केबे भी टेम्पलेट स्ट्रैंड नुह. इट इज माय कोडिंग स्ट्रैंड. दिस इज माय कोडिंग स्ट्रैंड और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड. कोडिंग स्ट्रैंड रो पोलारिटी 5' to 3' था. सो कोडिंग स्ट्रैंड रो केमतेगा हमें आरएनए बनै परिबा. आरएनए सिंथेसिस तो कोडिंग रो हुए नहीं. आरएनए सिंथेसिस टा केवल टेम्पलेट रो हुए. तो ताले जदि कोडिंग अछि मु टेम्पलेट बाहर करि परिबि कि नहीं निश्चित बाहर करि परिबि. केमति कॉम्प्लीमेंटरी देकरे बाहर करिबि तार टेम्पलेट टा कोन हबो 3' आसी गला कॉम्प्लीमेंटरी T A G C T A T C. This is 5'. एला कोन टेम्पलेट स्ट्रैंड. टेम्पलेट तैयारी करि परिबो. टेम्पलेट रो पोलारिटी हम पाई गले. So from this template now I will make the mRNA. mRNA रो पोलारिटी देखिबा थायमिन जगह कॉम्प्लीमेंटरी के आसीबा कथा एडेनाइन आसीगला नो प्रॉब्लम. जोडी अछि एडेनाइन सेठी के आसीबो यूरासिल पुणी एडेनाइन पुणी यूरासिल गुआनाइन थिले साइटोसिन थिले गुआनाइन. टी अछि माने के आसीबो एडेनाइन आसीबो ए रहले यू आसीबो. देन टी जगह कोन आसला ए. दिस इज जी. This is my 3' and this is messenger RNA. Polarity are kono 5' to 3' direction. Enzyme required RNA polymerase enzyme. So mRNA is complementary to template, no problem. The sequence of the nitrogen base present in the mRNA that is complementary to template. तो कंक्लूजन कौन पाइबा हम एटे लिखि परिबा सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस इन आरएनए is complementary to template strand. तो टेम्पलेट रा कॉम्प्लीमेंटरी है mRNA. बट याको जदि कोडिंग से आम कंपेयर करबा कोनटा डिफरेंस मिलुची देखो. एडेनाइन जगह एडेनाइन अछि. लेट मी चेंज ए कलर फॉर यू. येलो कलर यूज करबा. वेवलेंथ इज हाई क्लियरली देखि परिबो तमे मोबाइल स्क्रीन रे. एडेनाइन जगह कोन असला एडेनाइन थायमिन यूरासिल C
सी अच्छी जी जगह जी अच्छी ए जगह ए अच्छी थाइमिन जगह यूरासिल ए जगह ए पलि आसी जी जगह तुम जी पलि आसी that means the sequence of the coding strand is same with that of mRNA strand but the only change is in presence of thiamine जो जो जगह थायमिन अच्छी से खाली यूरासिल आसी आउ किसी चेंजेस तुम ऑब्जर्व करि पारुछ कि the sequence of the coding strand and the sequence of mRNA is 100% similar except in place of thiamine there is urasil तो ये आउरी सहज हो गला तुम जदि कोडिंग स्ट्रांड देकरी mRNA रो सीक्वेंस मागुता इट इज वेरी वेरी इजी फॉर यू तो जहाँ सीक्वेंस देइथिबो छापी देबो सेम एज इट इज बाकी खाली थायमिन जगह यूरासिल पुरे देबो नो चेंज एट ऑल इन प्लेस ऑफ थायमिन RNA will contain uracil rest all the bases remain same as that of the coding strand केवल सेहि पाई कि कोडिंग स्ट्रांड रो जो सीक्वेंस अछि mRNA रो सेम सीक्वेंस रहउछि सेति में ताको कोजन कोडिंग स्ट्रांड both sequences are same and it codes coding strand बुझिपाले so sequence of N base in mRNA is same with coding strand तो दीटा कॉन्सेप्ट आम एटू पाइलु ये गोटे मेजर कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट इन प्लेस ऑफ थायमिन यूरासिल इज प्रेजेंट केवल थायमिन जगह यूरासिल रही बाकी सबूतक समान रही sequence of the coding strand and sequence of the mRNA is 100% same गोटे चेंज कौन है in presence of thiamine you will get the uracil आओ बाकी सब कौन रहिबो समान रहिबो this is clear the next part is the type of RNA तो RNA हमर केते प्रकार अछि दिस RNA molecules are of 3 types messenger RNA ribosomal RNA transfer RNA ये सबू तक RNA DNA रू कॉपी through transcription process and for making these 3 different type of RNA there is necessary of 3 different type of RNA polymerase so RNA may be ribosomal RNA may be messenger RNA may be or transfer RNA so enzyme there are 3 set of RNA polymerase RNA polymerase 1 RNA polymerase 2 RNA polymerase 3 बुझिपाले RNA polymerase 2 will form the messenger RNA polymerase 3 will form the transfer RNA polymerase 1 will make the ribosomal RNA these are the concepts बुझिपाले so तीनटा डिफरेंट टाइप रा RNA बनेया भाई तीनटा डिफरेंट टाइप रा कोन अछि RNA polymerase अछि these RNA polymerase will go and bind to the promoter region then where the transcription will start but जो promoter region रो speciality कोन the promoter region is rich in thiamine and adenine AT rich region बुझियला कि नहीं ये जो RNA polymerase concept हमें देखिले this RNA pol or polymerase bind to promoter region को बांधिला then the transcription will begin transcription टा start
तो आम देखा प्रमोटर स्पेशलिटी कौन प्रमोटर इज AT rich and this is commonly called as my Tata box. The promoter is commonly called as my Tata box because it is rich in thymine, adenine. This box present in the promoter which is called as my Tata box. This part is clear. Now in my next episode I will continue the mechanism of transcription. How transcription occurs, what are the different steps of the transcription. These all details we will be discussing in the next episode. Okay, thank you so much.